Sir, this is payment of taxes under GST. Okay. Now, let us understand the practical nuances. Now, what I have tried to do is, I have tried to not put just theory, but the amendments. We have come here today to understand with real life cases, notices, amendments, implications of that in these sections. We will be discussing section 49 to section 53A, read with several rules in section 80. Sir, PDF is not opening actually here because it's showing the default software as Microsoft Edge. This one, sorry. So in Microsoft Edge is not supporting this, I believe. This should be my Adobe. I think last time you clicked Adobe and then you opened it over, sir. Because double clicking this, it's not automatically taking that. This is by default. It is there. Right. Open with. Open with. Thank you, sir. Thank you. So, what we are trying to understand is there are several amendments in this area, especially interest. We need to understand that. See. Now, sections are there for interest. We know section 50, subsection 1 for output tax, section 50, subsection 3 for input tax rate, right? Now, that is read with rule 88B. इसमें क्या है? आपका पहले अगर आपको ध्यान होगा, interest charge होता था gross tax liability when there was no clarity, right? Then it became net tax liability in case of delayed filing of GST 3B. Up, we are going to see by examples. So let us see by examples, not by theory. Let us see this example. टैक्स लाइबिलिटी फॉर जून महीने का 2 लाख का टैक्स लाइबिलिटी है. जून का सर रिटर्न फाइलिंग डेट कब है? द रिटर्न फाइलिंग डेट फॉर जून इज योर July 20th, बट द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन 28th of July, 8 days delay, क्लियर कट. टैक्स डिस्चार्ज 2 lakhs डिस्चार्ज. हाउ डिस्चार्ज? 40,000 बाय कैश एंड 1,60,000 बाय ITC. ठीक है. अब नाउ सर 8 days delay, section 50 subsection 1 read with rule 88B. What will it say? Amended. It will say that you have to pay interest only on the cash portion because this is my vested right, 1,60,000. I've already paid it 1 year ago. This is my carry forward and this is accumulated for the month. Why are you penalizing me for a vested right which I have the right in either way? If I would file or not file, this would be my right till the time I do my business. So this is my asset already. So if at anything 40,000 is supposed to go to your exchequer, you can charge interest on that. This benefit has been provided just a few years ago, but retrospectively applicable from 1st of July 2017. What does this mean? This means that from the first, anyone could have at that point in time applied for refund also, because it is in a clarificatory nature. What? Applicable from 1st of July 2017. So now what is the return file date? Interest is on cash portion, as sir said, 18% on 40,000 rupees. Fine. Acha sir, tell me one thing. I have not filed this return of June. 6 months gone. Next year, assessment happens. And after that, adjudication happens. Section 73, subsection 1. Before that, intimation comes in DRC 01A. Right? That is rule 142(2). Right? So, when that pre-show cause notice comes, at that point in time, I have an option to voluntarily make payment. Voluntarily कर सकते हैं. अभी तक adjudication start नहीं हुआ है. Show cause notice issue ही नहीं हुआ. DRC 01A I'm talking about. So at that point in time, if I am making this particular payment at that point in time, whether can I take the benefit? Can I take the benefit of gross tax liability or net tax liability? Sir, net tax, yes. Rule 88B says once your adjudication proceedings have begun and under section 73 or 74, and if the return has not been filed earlier and has been filed after the adjudication proceedings have begun, then I will not give you that benefit. 1-2 साल पैसा भी आप गवर्नमेंट का रोक करके रखिए, फिर उसके बाद में भी बेनिफिट देंगे. No benefit. Please pay on gross tax liability. Right? Now, second example, 2 lakh rupees, same example, 8 days delay, but for June I have paid only 1,80,000. 20,000 I have not paid in June only. Short payment, short declaration, short everything. Now I have paid of 1,80,000, 30,000 by cash and 150 by ITC. Sir, ITC to is benefit. So I will pay 18% for 8 days on 30,000, right? Why? Because return file late, 18% on cash portion plus RCM cash portion. In this example there is no RCM, but had there been RCM, we know we have to pay RCM in cash in table 3.1D in GST 3B, only in cash, and claim the input in the same month we can in table 4A3 of GST 3B return, right? So
any amount which we are paying by cash in case of delayed filing of return, if I disclose that in the same month, then I can get the benefit of this net tax liability. Now sir, what about this 20,000? This is for June, but I have disclosed it in November. Means sir, I have done some suppression, or I've forgotten, or whatever that is, but I have not disclosed it only to the government. It is not a valid return only. Self-assessment has been not done properly. So in November, I make the remaining 20,000 payment, but the bill dated is June only. I will upload it in GSTR 1. I can upload June bill, and 3B that there is no breakup. Whatever amount I will put in 3.1A, I will make the payment. So when I am making the payment in November GSTR 3B, I have sufficient input tax credit, 1 lakh. Sufficient cash balance, 1 lakh rupees. Will I get the benefit of net tax liability? Means for the month of November, if I have 10,000 rupees input tax credit, that 10,000 will be reduced and only 10,000 on that I will pay interest, or on gross tax liability on entire 20,000 I will pay interest. What is it? Will I get the benefit for short declaration for such a late payment, not disclosing it in the correct 3B? No, I will not get the benefit. This is not the benefit. Even if you have 1 crore of ITC in November, still 20,000 on 20,000 you will have to pay interest from 20th of July 2022 to 20th of December when you are actually making the payment. So we need to understand what? Only in cases of delayed filing of GSTR 3B by n number of days, we can get the benefit of subsidized amount of interest calculation, in the sense we have to pay interest of 18% per annum or 1.5% per month only on the cash portion paid, only when the liability is paid delayed by certain number of days or whatever number of days it is, but reported in the correct 3B return. If I report in the next 3B return 1 month, gross tax liability. This is very clear. Everyone should be very clear on that, and till date there is no change about this. I will keep on adding further amendments from here. This is not the latest amendment. I will keep on adding further amendments. Sir, this is for that point in time. This is an example, sir. This tax liability, gross tax liability, 1,72,000 is the 18% on my sale, gross tax liability. Second column, input. Input means what? Of my accumulated input and what? Opening balance. Accumulated during the month and opening balance. This is the input. This is the gross tax liability. This minus this is net tax liability in cash plus RCM if any. So I am saying, sir, this is red. Why? Because 23 days delay. On what? Whether I will take 2,37,320 net tax payable or gross tax payable 22,32,000 for calculation of interest. Sorry? Net tax. Net tax, sir, is correct, because this is just mere delay in filing of 3B. I have not reported any amount of April in August or anything like that. So 23 divided by 365 into 18% into 2,37,000. Fine, voluntarily I make the payment. So this is their benefit. Okay. Now we will add one more to that, sir. Amendment, budget amendment. 53rd GST Council, 22nd June amendment. What is the amendment? They are saying, sir, this is very good, sir, no problem. You are giving me this benefit. I am an assessee, I am very greedy, sir. I want this benefit also. What benefit, sir? See this example. Net tax payable is 237, same example, 237,320. Okay, let's come to August month. August 2018. My net tax payable here is 5,72,720. Ideally, without amendment, I should make the payment of 5 days delayed into 18% on 5,72,000. But the amendment is on 20th of September for August 2020, 23 return 3B. If in electronic cash ledger I have deposited on the 20th or before the 20th of September, how much? Whatever amount, it will be considered to be already deposited with the government, and we will get the benefit of our balance in electronic cash ledger if deposited up to the due date of filing of that return. And if I file the return 1 day, 10 day, 20 days late also, whatever, does not matter, I will get the benefit initially of this, so I am already getting of input tax credit, and I will get the benefit of debit balance in my electronic cash ledger deposited up to the due date of filing of 3B. Double benefit. मतलब 5,72,000 का नेट टैक्स पेबल था, लेकिन 8.5 लाख रुपया जमा था मेरा कैश लेजर में.
So I don't have to pay any interest. I don't have to pay any interest, even if I am 5 days here late. So this is the amendment. Now for next, this 5,72,000 is set off against 8,50,000. 2 lakh something is left. That 2 lakh something is carried forward here. Out of 14,64,000, 2 lakh we will reduce. It will be on 12 lakh rupees. We will calculate this. Are we understanding this part? Any balance of credit ledger, any balance of cash ledger, if deposited up to the due date of filing of the specified GSTR 3B return, we will get the benefit of both. Reduce it against the gross tax liability and calculate interest at the rate of 18% only in cases of delayed filing of 3B. Now I will report April's sale and tax in August. Will I get benefit even with this amendment? No, I will not get. The law is very clear on that. Even if you have deposit of 8.5 lakh rupees in cash ledger also, in credit ledger also, only 20,000 rupees you have to make payment of April gross tax liability. This is still there. They want to penalize, otherwise everyone, they will keep ledger. They are seeing, okay, they will not make payment. There will be mismatch, huge mismatches with 1 and 3B every month. Purposely they will say, Arey, so no, I don't need to do anything. No late fees, 3B to I am filing. Interest, no payment. Tax to I am already making the payment. No, in assessment also it will not come, because assessment is for entire year. For under section 61, in entire year is already paid within the year. And in 73, 74, what will they ask me? No penalty. Where is penalty? Where is no interest? No interest also. No, they can't do that. Right? Now, sir, I will add one more layer of benefit to the assessee. That is circular number 19204. Sir, let us take this example. What is the example, sir? I am claiming input tax credit under IGST head 1 lakh rupees. By mistake, I have put one more zero. I claim 10 lakh rupees. 9 lakh rupees out of 10 lakh rupees is ineligible credit because I don't have any invoice to substantiate. Now, sir, I have in my IGST ledger 12 lakh rupees. Means 2 lakh rupees I had earlier, 10 lakh. Out of 10 lakh, 9 lakh rupees is fraudulent. And 1 lakh rupees is fine. So, ineligible credit 9 lakh. Balance in IGST ledger 12 lakh. 1-2 months pass. My IGST ledger, we know the order, we will discuss. Order of utilization, IGST is universal credit. It will set off against every, we have to exhaust that, we will see. My balance of IGST ledger 2 months later falls 6 lakhs. Falls to 6 lakh rupees. Now 9 lakh rupees I have claimed which is fraudulent. And now my balance is 6 lakh rupees, means 3 lakh rupees of IGST fraudulent ITC I have utilized. Availed to had availed 9 lakhs. Do we know this benefit? That are we supposed to pay interest on ineligible ITC availed but not utilized? Are we supposed to pay interest on that also? No. That benefit has already come last year. If you have availed 1 crore rupees also, but if you have parked that 1 crore rupees and your balance in your credit ledger has never come down below 1 crore, so you've never utilized it. You had it in your thing. Next month you will amend it, or I have not utilized it only. There is no interest on incorrect availment, but incorrect availment and utilization. This is amendment to section 50, subsection 3, read with rule 88B. This is also an amendment which came out last year. Benefit for us, for the assessees. Now, in this particular case, there is one more benefit. What is the one more benefit here? As sir said, if the IGST balance has fallen to 6 lakh rupees, 9 lakh rupees is the fraudulent ITC, 3 lakh rupees to khali hai government ka, which is not mine, but I have claimed it by setting it off against my output tax liability. 3 lakh ka tax to government ko mila hi nahi hai. Otherwise, the government should have got 3 lakh rupees worth of output tax. But they have not got because I have set off against some fake credit. Right? Now, the benefit here is saying that since IGST liability, for setting of IGST liability, IGST credit can be utilized, CGST credit can be utilized, SGST credit can also be utilized. So why so much of bias for IGST credit? IGST credit for calculation of ineligible IGST credit for the purpose of calculation of interest. I can get the benefit to take cumulative balance of CGST plus SGST plus IGST, and then I will see whether it is more than 9 lakhs or less than 9 lakhs. In this example, I had 5 lakh rupees of CGST balance, 5 lakh rupees of SGST balance, 10 lakh rupees plus 6 lakh rupees, which is the updated IGST. 16 lakh rupees I have. Has it gone below 9 lakhs? No interest. Simple. My entire IGST is become zero, and 9 lakh rupees I have claimed IGST fraudulent.
But CGST, SGST plus IGST means zero. CGST, SGST is more than 9 lakh means 5 lakh, 10 lakh, no interest. This is the circular. This is binding on us. Circular number 19204 from last year, 17th of July 2023. Sir, we were discussing right now that 20,000 rupees of April 2023, if we report in August 2023, whether we will be liable to pay interest on gross or net. Gross, I said. Sir, this is your tax liability breakup and interest calculator. In our GSTR 3B return, we have an option. What option do we have? Sir, see this. I'll just give you an example. This is total 1,47,000 for the month of October 2021. IGST, what? Output tax liability. CGST, SGST. But for the month of October in itself, pertaining to October, is only 1 lakh. 47,000 pertains to previous months. As we mentioned right now, April का August में, वैसे ही September का October में, August का October में, July का October में, रिपोर्ट ही नहीं की है पहले महीने में, October में जाकर के रिपोर्ट कर रही है. So now the GSTR 3B return from the assessee side, हम लोग के पास में ऑप्शन रहता है कि सत्यवादी हरीश चंद्र के तरह हम इसको रिपोर्ट कर दे, बोले कि सर अक्टूबर का नहीं है ये 3B में, देयर इज नो ब्रेकअप, इट इज ओनली टेबल 3.1A जहां पर पूरा अमाउंट 147 के जाता है, देयर इज नो ऑप्शन टू शो previous period which month, so कुछ ऑटोमेटिक आई विल नो. बट ये एक फैसिलिटी आया है. दिस इज अ फैसिलिटी wherein if we report this is the payment for the month of October itself. ये पहले पेमेंट कर देते हैं अपने, we press make payment और post credit to ledger, then after that there is an option tax liability breakup voluntary. We click this, ये देखिए आ गया. अक्टूबर का तो जो पेमेंट किए हैं, after making that payment we get the option to calculate automated interest. I can put certain liabilities which I have to report in October return and I can write it next to my previous periods. What is the purpose of this? Automated calculation of interest, correct amount of interest by the portal itself. Do I need to make payment right now? No, this will be auto populated in the next month GSTR 3B in table 5.1. This will be auto populated in next month GSTR 3B table 5.1. What is this called? Tax liability breakup and interest calculator. So as officers we can always tell the assessees that sir, आप जो ये पहले का जो आप पेमेंट नहीं किए, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किए, आपको नहीं करना था, no, all that's not acceptable. If an option is available, if I am privy to that information, the assessee has the option to report previous period output tax liability and calculate the interest and make the payment in the next month 3B. This we already know the computation method, which is the number of days, right, divided by 365 days into the tax liability, 20,000 into 6 महीने divided by 12 महीना into 18%. As simple as that, right? Set of rules is very important. There are so many notices, not scrutiny notice. Scrutiny notice में तो पता ही नहीं चलेगा. Scrutiny notice तो has certain parameters, 13-14 parameters. ये तो पता ही नहीं चलेगा. ये तो audit में पता चलता है. Sir was talking about audits. Once we get the audit ledger, once we get the other details from the books, we will be able to figure out whether proper mechanism of set off of input tax credit has happened or not as per rule, as per section 49A read with rule 88A. Now what is the rule? Sir, IGST credit, whatever amount we have credit, it needs to be first set off against IGST output. We know that. उसके बाद में जो भी कुछ बचा हुआ है, we will set it off against CGST and SGST in any proportion. But we have to exhaust our entire IGST credit so that I can proceed to CGST credit and SGST credit. Sir, IGST का पूरा credit utilize हो गया. I have used it against setting off against IGST output tax liability and against CGST, SGST output tax liability in any proportion. Fine. So remaining ITC in any order as I've told you and GST, IGST, ITC to be completely exhausted. Now CGST. CGST first against CGST. ये नहीं बोल सकते कि हम इतना दानवीर है कि CGST का मेरा इनपुट है और मैं डायरेक्ट जाकर के IGST का आउटपुट के साथ में सेट ऑफ कर लूं. नो, फर्स्ट CGST का इनपुट है तो वी हैव टू सेट ऑफ अगेंस्ट CGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. Whatever amount remains that I can use to make payment of IGST liability. But I cannot use CGST input to set off SGST liability. We know this. गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू द बेनिफिट. गवर्नमेंट का आईटीसी है, मतलब कि पहले का पेमेंट किया हुआ है, वो आप कोई भी सर्टेन स्टेट का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या रेवेन्यू है उसके साथ में आप सेट ऑफ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट विल कीप ऑन हैविंग टू मेक पेमेंट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. व्हाई विल द गवर्नमेंट टेक दैट ओनस?
Let us see this by example. This we have explained and all that. Let us see this example, sir. This is as per payment of tax portal. What is this, sir? This is cash ledger. Cash ledger में क्या है? Tax में ये पड़ा हुआ है. Total कितना है, sir? Around 20,657. We have in the cash ledger balance. This credit ledger, sir. This is the balance which I have. 13,065, 1,44. So कितना है? 20,657 cash ledger balance. And credit ledger balance is 1,44,9. This is the liability. What is the liability? 139,506, 8,000, 8,000. This is the liability. Now, can I do it? ऐसा liability 155 हुआ ना, इसको अगर ऐड किए तो 155 हो गया, और input tax credit जो आपका है 144,913. This particular input tax credit. This particular input tax credit, whatever we have here, 144,913. इसको direct minus कर दे, और जो amount आएगा वो cash में. No, this is not possible. What we have to do is, there is input tax credit. What is the input tax credit, sir, in our example? 13,537, 65,000, 65,000. IGST, CGST, SGST. We have put here IGST, CGST, SGST. Input is on the top line, top row. This one, and this is output tax liability. Where is the output tax liability? 1,39,000, 8,000, 8,000. This is the output tax liability. I have put it here. IGST, CGST, SGST. This is output tax liability. This is input tax credit. Now what will I do, sir? First I will go to IGST. This is IGST. IGST output tax liability is 1,39,506. तो सर फर्स्ट मेरे पास में मेरे को देखना है क्या होना चाहिए. IGST input. Exactly. IGST input है लेकिन बहुत छोटा अमाउंट है, सिर्फ 13,000 का है. तो 13,000 को तो सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे. उसके बाद में हम क्या करेंगे? IGST 0 हो गया सर. CGST, SGST का लाइबिलिटी के साथ अगेंस्ट में तो IGST का क्रेडिट ही नहीं है. कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? CGST का इनपुट कितना है सर? 65,688. ये उठा करके इसके साथ में सेट ऑफ कर दे अपने? नहीं कर सकते. अभी तो डिस्कस किए. CGST का इनपुट है, वो सबसे पहले CGST का लाइबिलिटी के साथ में सेट ऑफ करना है. CGST का लाइबिलिटी इज 8,016. So out of 65,000, we have taken just 8,016. We have set off against the output tax liability. Remaining amount 65,000 minus 8,000, 57,000. I can use this amount to set off against the remaining output tax liability of IGST. तभी भी इसका पेड़ भरा नहीं है, अभी भी बाकी है. Now then what I will do is I will come to SGST. SGST again I have 65,688. Now मैं डायरेक्ट इसको उठा करके यहाँ पर ले आऊँ? No. I have to first see कि मेरे घर में लाइबिलिटी कितना है. SGST का घर में लाइबिलिटी कितना है? घर में 8,000 लाइबिलिटी है. So I will take a small chunk out of it. I will set off against this output tax liability. I will put the input here, and then the remaining amount 57,000 I will set off against the IGST output. तभी भी पेड़ भरा नहीं है इसका. There is certain amount of cash also which we need to pay because the liability is 1,39,506. This plus this plus this. Still it remains 10,625. We will pay by cash. But we have to follow this mechanism. Now sir, tell me one thing. Once your IGST credit has been exhausted, I'll skip this. Can I come to SGST? Exactly. We cannot. ये रूल है मैडम, ये रूल है. पहले IGST को 0 करिए. ये 0 हो गया, यहीं पे 0 हो गया. इसका बचा हुआ है तो CGST के पास में जाइए. You cannot go to SGST. This is the biggest problem. That's why in many cases we see the credit balance of SGST is relatively higher than the credit balance of CGST or IGST. IGST का तो obviously it is used again set off for everything. Then CGST credit is used to set off IGST output tax liability. Then SGST credit is used to set off IGST liability. तो लास्ट में आता है. तब तक तो CGST खत्म कर देता है. इसका तो बच जाता है बेचारा का. इसका तो piling on input and all, right? So this is the mechanism. Now are we aware of this PMT09? PMT09 is a form wherein we can transfer certain amount of cash आपका deposited है in electronic cash ledger under the head of tax in IGST. Can I transfer it to in my same मतलब कि same GSTN में in the same state same GSTN में can I transfer certain amount of cash which is there in the major head IGST minor head tax to CGST major head minor head tax? Can I do that? Cash ledger, not credit ledger, cash ledger. It should be possible. Yes, we can do that. It's cash. We can do that. नहीं CGST से भी उसमें चला जाएगा. मतलब कैश लेजर में आपका चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
is what I'm saying. But cash, it should be cash ledger. Credit ledger we cannot do that. Cash ledger we can do by using PMT 09. So this I put here, transfer from major head. Major head मतलब क्या होता है? IGST, CGST, SGST. Minor head मतलब क्या हुआ? Tax, interest, penalty, late fees. These are minor heads, right? So transfer between major head IGST to IGST, any minor head possible. अरे IGST का टैक्स से IGST का इंटरेस्ट में डाल रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ट्रांसफर फ्रॉम IGST टैक्स टू इंटरेस्ट ऑफ CGST पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रांसफर फ्रॉम IGST टू HGST of late fees पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That is possible. Here for SGST, see, from IGST to HGST is not applicable. Not applicable. This is not possible. So from IGST to IGST you can do, IGST to CGST you can do, IGST to SGST you cannot do. See, from SGST to IGST you cannot do. SGST से आप नहीं कर सकते. बोलने का मतलब क्या है? लिखे लास्ट में, ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैश कैन बी डन इन PMT 09. In different GST and registration of same PAN is only permissible for two major heads, IGST and CGST. This case is of two distinct entity. मेरा कंपनी है कलकत्ता में भी तुलसियान एसोसिएट्स, मेरा कंपनी महाराष्ट्र में भी है तुलसियान एसोसिएट्स. बैलेंस शीट एक जाता है, ITR एक जाता है, बट इफ इट्स इन अ डिफरेंट स्टेट आई नीड टू टेक अ डिफरेंट GST registration. So PAN is same for Maharashtra R.Tulsian and company. PAN is same for Bengal R.Tulsian and company. GSTN is different. So, but they are distinct entities because they will merge into the same balance sheet for income tax purpose. Same PAN. So, in that case where there are distinct entities, two different GSTN but same PAN. So, ये restriction है. अरे भाई एक स्टेट का SGST का अमाउंट उठा करके दूसरा स्टेट का IGST में डाल देंगे. That is not possible, ना. Every state is very possessive about any balance put in their account. SGST for cash ledger or credit ledger. So from one state, SGST balance you cannot put to any other account is what I'm saying. So for your distinct entities, you can transfer between your CGST and IGST. This is for the same state. For the category I can transfer to and from by adding this. The amount to be transferred to different GSTN on same PAN. This I've already done here. I've already mentioned. You can go through this. Now rule 86B. Are we aware of this rule? We all were talking about fake invoices during the break. Fake invoices क्या हो गया? That माल आया नहीं हमारे पास में. And invoices have been issued and uploaded in the supplier GSTR 1. It has come to my GSTR 2. I have claimed input tax credit by setting it off against my sale. So the government has never received any money, right? So उसके लिए क्या बोले हैं कि in big companies मतलब क्या हुआ? Every month, in any month, if your taxable turnover means for that particular month taxable sale, if it is more than 50 lakh rupees, I'm talking about taxable sale, taxable outward supply, not exempt, not export, taxable, right? जिसके ऊपर में टैक्स पेमेंट करना है. If that is more than 50 lakh rupees, तो इन लोग क्या बोलते हैं कि सर बहुत खतरा होता है. 50 लाख रुपीस का आपका सेल रहता है, उसके ऊपर में बहुत हेफ्टी अमाउंट रहता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि पूरा फेक इनवॉइस आदमी लिया है, फेक इनवॉइस सेट ऑफ करके पैसा नहीं जाता. तो गवर्नमेंट ने सेट की एटलीस्ट 1% कैश बैलेंस शुड बी यूज्ड टू सेट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, इवन इफ यू हैव फुल 100% your credit ledger. Let us see this example. I have in my opening balance cash ledger nothing here. Credit ledger 5,000. ये देखिए, ये एग्जाम्पल, ये क्या है सर? क्रेडिट लेजर 5,000 ओपनिंग बैलेंस, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर दी पर्टिकुलर मंथ 1.5 lakh, CGST, SGST, IGST. Output input tax accumulated during the month 95,000. Now this is rule 86B calculation जो बोलता है मैंडेटरी 1% कैश आपको बैलेंस पेमेंट ही करना पड़ेगा आपको, इवन इफ यू हैव सफिशिएंट क्रेडिट बैलेंस, इट डज नॉट मैटर. आई वांट टू स्टॉप फेक इनवॉइसिंग, आई वांट टू कीप अ ट्रैक. So opening credit ledger 5,000, it's come here. Avail during the month, it's come from here. So accumulated input tax balance is 1 lakh, right? Now maximum set off available against output tax liability. What is our output tax liability? 1.5 lakh. But the government is saying you cannot use entire 1 lakh. You have to mandatorily use 1% of the tax liability. मतलब tax liability 1%, 99% of the total ITC you can use.
So 99% of the total ITC you can use. So 1 lakh आपका जो है उसका 99% you can use. So 99, 99, 99,000, 1,000, 1,000, 1,000 you have to pay by cash. So यहाँ पर whatever यहाँ पर आप देखेंगे set off कर रहे हैं जो भी है CGST, SGST, IGST you are setting off 99,000. In your credit ledger 1,1,1,000 is still there and you have to pay by cash. This is at least some restriction. ये तो अभी this is 1,000. This would be in crores. So cash payment will also be a lot, right? But sir, this is to curb fake invoicing or to keep track of fake invoicing. What about genuine taxpayers? तो working capital blocking है. कैश क्या होता है? बैंक से उठा करके गवर्नमेंट को देता हूँ ना. वर्किंग कैपिटल ये 1 लाख, ये 1,000 है, ये 10 लाख भी हो सकता है. When I make a sale of 10 crores, it can be 10 lakh rupees cash. 10 lakh रुपया गया मेरा just because of this rule. So there are certain exemptions. What are the exemptions? पहला तो rule, what let me tell you again, 50 लाख रुपीस से ज्यादा मंथली सेल, वो मंथ में अगर हुआ है टैक्सेबल सेल, तब ये 1% वाला रेस्ट्रिक्शन आता है आपका, right? Now what are the exemptions? The exemption is if it's a company, then the managing director or any whole-time director, what has he done? For the last 2 years, continuously, he has made payment of more than 1 lakh rupees in his ITR file. No relation with GST. क्या relation है? Income tax में मैं 10 लाख पेमेंट करूँ जो भी है, I have got different sources of income etc. But they are saying कि these people, ठीक है, they are genuine people. They have paid a lot of money for income tax. I will not block their working capital. So those people, for the company managing director or for partnership, any of the partners, or for the company whole-time director, for the HUF Karta, or for any other people, there, if in the last 2 years, where the ITR date has passed, 23-24 का ITR date कब था? For non-audit cases, 31st of July. It is passed. So 23-24 में, if my partner for my firm has paid more than 1 lakh rupees of income tax, 1 lakh rupee मतलब क्या? Self-assessment tax नहीं, नीचे वाला. 1 lakh rupee before setting of TDS, TCS, advance tax, 1 lakh rupees gross tax liability. मतलब total income पे जो आता है आपका income tax का, right? If you have made payment of 1 lakh rupees or more for continuously last 2 years for which ITR date has passed, any of the partners, then you don't need to follow this. We will not block your further working capital. Second exemption, if you are an exporter or if you have claimed refund of more than 1 lakh rupees in the last year, you don't need to follow, or we will not block your this 1% because we understand that your input tax credit particular balance as it is getting blocked. So 1% further I will block because you're not doing domestic sale, you're doing export sale. Your ITC balance is already there. You are applying to the department to get that. You're already suffering 3 months of working capital shortage and all of those things. Why will I super burden you further with this mandatory 1% payment with cash? So for those people who have claimed refund under GST of more than 1 lakh rupees when they have exported in the last year, no problem. We will not burden you any further. Sir, inverted duty structure. In case I sell footwear, I purchase and it is 12% input. I sell, it is 5% tax. So 7% is already there, always there in my wallet, in my electronic credit ledger. So in that particular case, I am already sitting on a mountain of input tax credit. Why will I disallow 1% of input tax credit further? It will keep on piling further. It will create more problems for you. These are the logics. Or if you have already made payment in cash of at least 1% from April, May, June. We are talking about December 2024 right now. Return for 50 lakh. And they are saying from April, May, June, July, August, September, October, November means up to those particular months. Up to those particular months cumulative. If you have made payment more than 1% in cash, we will not burden you. You to already proved. Your working capital is blocked. You already paid more than 1% cumulatively for all the previous months in the financial year. So for that month you don't need to do. But for the month of January, the cumulative will become up to December. In December, if I have not made any payment in cash, and if cumulative month payment in cash becomes less than 1% of the total output tax liability, then again for January I will have to make cash payment. So this is again a continuous assignment, this particular thing. So this is a very important rule. We just showed the chart for suo motu cancellation. This is one of the things. Violation of 86B is a ground for suo motu cancellation in the hands. This is a very important tool in the hands of officers, that if this is not being complied, it is a ground fit enough to
Call for a show cause notice for suo motu cancellation under Rule 21 read with Section 29. We just saw that in the last presentation. Sir, who are the people where this particular thing is not required to be done? Sir, government department, public sector and local authority, statutory body. ये तो हम लोग का आदमी लोग हैं, इन लोग के ऊपर में क्या restriction लगाना है, right? So these people are exempted from this 1% rule. Sir, if I receive a demand notice, I want to ask you, if I receive a demand notice, there is a demand confirmed, I want to make payment. Is it mandatory for me to pay by cash, the output tax liability? Or can I use the benefit of the balance of my electronic credit ledger, which I have accumulated over the years? Or is it mandate that if there is any demand of output tax liability, I have to mandatorily make payment by cash, means from my cash, from my bank, I will transfer here to my cash ledger and then I will make payment? No, sir. There is no mandate. This is the department circular 172/04/2022. Very important. Earlier, the departmental officers, they were forcing the assessees that no, make payment out of cash only for output tax liability also. That was burdening them. Their working capital was being blocked. If you have crores and crores of input tax credit, they were asking them not to use that. But that is incorrect. They are saying for what? For any self-assessed tax, means 3B का जो filing कर रहे हैं input use कर सकते हैं. And for any consequence of any proceeding instituted under the provision. सभी चीज cover हो गया. 73, 74, 61, 62, 63, 64, 67, 65, 70. Everything is covered. What is covered? Self-assessment is covered. Provisional assessment is covered. Your scrutiny is covered. 61. 62. Assessment, best judgment assessment is covered. 63. Assessment for non-filer. Non-filer में input कहाँ से आएगा? 64. Summary assessment. 65. GST audit. 66. Special tax audit. 67. Inspection. Search seizure. There is no mandate to make payment. You all are aware of that, right? During search, seizure, inspection, there is no mandate to make payment. If the officer is coercing, you can file a complaint. Or if there is so much of pressure right then that you have to make payment so as to send away the entire team, make the payment to the government under Section 73, subsection 5 and make it under other category in DRC 03 and write payment under protest. And the next day, you take back your statement and say that, sir, this payment, I'm talking from the point of view of the SSC, that this payment was made under coercion. I want a refund back. Many case laws are there. They get refund along with interest also. What I'm trying to say, during any proceeding before adjudication, there is no mandate of payment of tax. Apart from only one section, that is section voluntary payment. Section 73, subsection 5, voluntary payment in DRC 03. That today also I can make a payment, but that is by own volition because that is voluntary. But we are masquerading that, and the department many times they put pressure during summons, arrest, during search seizure, during any other things that make the payment right now or I will arrest you. Okay? So what I am trying to say is that during any proceeding 73, 74 also you can use the credit ledger balance for payment of your output tax liability. Sir, RCM is output tax. RCM definition is output tax liability. The purchase, the recipient is paying the tax. Sir, if I have to discharge RCM tax under RCM, will tax under RCM categorize itself as output tax liability to get the benefit of this input tax credit set off? Or is it compulsory to make payment of RCM only by cash? Compulsory to make RCM payment only by cash. We cannot take the benefit because our tax under RCM is not in the definition of output tax. Right? For interest, penalty, late fees, can we use credit ledger? No. Itta benefit nahi milega. That is by cash. Right? Sir, blocking 86A. Credit ledger has been blocked. No show cause notice. No adjudication. No assessment. No communication. No reason. Tomorrow I wake up, I see this page. I see this page. Input tax credit ledger blocked. Kindly contact your range officer. No notification, nothing, no notice. The draconian provision, 86A. When does this happen? This happens in those cases where there are reasons to believe that the officer says that, sir, if today we do not block now,
that particular money he will abscond and we will never get that particular money from the revenue will face huge losses. So today let us block as a temporary measure and immediately finish the investigation and go again, start the adjudication 73-74. But till that time, sir, block this. This guy will use it all up. Because I have reasons to believe he is a fraud case. Simple bhasha. So this is a temporary measure. But the department in many cases they've used it as a tool for draconian measures. Because it can only be blocked temporarily for up to 1 year from the date of passing the order. But many cases after 1 year, 2 years, 3 years, धंधा कैसे करें? Try to understand from the SSE's point of view. Any penny I am making payment as a sale, I have to make payment of gross tax liability rather than net tax liability. All input is gone. Gone means blocked. 100 रुपया में 18 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, 1-2 रुपया नहीं. So for a trader, तो his business is shut. So this is a very, very sensitive thing, but it has been used in a many draconian way in many ways. So the commissioner or authorized officer not below the rank of AC, if he has reasons to believe that in the ITC ledger, I have 50,000, 50 lakh, 5 crore, 50 crore rupees of balance, which has come out of certain fraudulent activities. What are the fraudulent activities or reasons to believe under this ground? 86A, Rule 86A, Sub Rule 1, Clause A to D, which we are going to see in the next slide. Let us continue here. Amount of ITC, if the officer has reasons to believe that in the credit ledger, there is certain amount which the assessee has got out of fake invoices, goods he has never received, or fraudulently availed or ineligible, and he has reasons to believe that be based only on one of the grounds which we are going to see, read, may for reasons recorded in writing block the particular credit ledger, that all the payments will be made out of cash for maximum of 1 year. After 1 year, the department has to unblock this, right? Now, what are the grounds? These are serious grounds, sir, serious charges of fraud. Only on these grounds that this can be done. What is the first ground? First ground is fake invoice. Supplier था गुड़गांव में, छापा लगा 2 साल बाद में दिखता है कि है ही नहीं, पड़ोसी नहीं जानते कभी उसका एड्रेस यहाँ पर कभी था ही, और वो 10-10 करोड़ का इनवॉइसेस दे करके GSTR 1 में अपलोड कर दिया. 3B is not filed. He's passed on those 10 crore of input. It's come into my 2B, जहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ 10 करोड़ का. I have used those fake credit and I've set off. So government has never got that money on that 10 crores. So input tax credit taken on fake invoices for which goods have never been received. Supplier who is non-existent, where the availed on invoices where goods have not actually been received only. Third is that, sir, 16(2)(c), draconian. My supplier, I trusted him with my life, he took my money, my supplier, and he never filed his 3B. I can be penalized. My credit ledger can be blocked. See here, ITC is availed on invoices, the tax in respect of which has never reached the government. Means what? If sale has happened, supplier has taken money from me, but he has never filed his 3B. It's a ground fit enough for my jurisdictional officer to block my credit ledger. This is draconian. सर इसमें पार्टी का क्या ये है? सर इसमें प्रॉब्लम आप ये समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. आज मैं अगर कोई भी आदमी को विश्वास करके माल खरीदता हूं और पूरा पैसा के साथ में टैक्स अमाउंट उनको दे देता हूं, वो आदमी धोखा करके टैक्स अमाउंट लेकर के वो फाइल ही नहीं करता है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया नहीं लेकिन मेरे जेब से ऑलरेडी चला गया. तो आई कैन नॉट कंट्रोल हिज एक्शंस. डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए सर, उससे आप एक्सट्रैक्ट करिए. सेक्शन 76 डिफॉल्टर्स, एक तो सेक्शन 76 है, 3, 4, 5, 6 क्या बोलता है सर? एनी पर्सन हैज कलेक्टेड टैक्स बट हैज नॉट डिपॉजिटेड, उसके ऊपर अलग कार्रवाई होगा. सर वो सब मैकेनिज्म में आप जाइए ना, कैच द डिफॉल्टिंग सप्लायर, व्हाई यू कैचिंग मी? बट ये तो रूल बोल रहा है, रूल 86A, this one, sub rule 1, clause whatever C, it is saying any input which I have claimed in respect of which taxes not reached the government. What is my fault, sir? Plethora of positive favorable judgments, Supreme Court judgment also. Suncraft Energy, as I told you from Calcutta, I got nothing. Department is not giving. Next, person claiming ITC. मैं खुद ITC claim कर रहा हूँ, मैं खुद ही existent नहीं हूँ, मैं खुद ही बोगस हूँ. और I am claiming ITC, there is no invoice. In those cases, my input tax credit ledger can be blocked for 1 year. But please try to understand the departmental officers, your good selves. This is a very sensitive case because एक दिन में बहुत कठिनाई हो रहा है ट्रेडर को क्या जो भी, because they are making payment entirely in cash. So when you are utilizing this particular machinery 86A, please ensure that it is after careful examination.
It is objective, not subjective. You have some material evidence. There is some file made about it, right? And these are the monetary limits. If the fraudulent ITC is less than 1 crore in the credit ledger, then ACDC can issue the particular order to block it for a year, etc., etc. Those things are here. Sir, during audit में अगर पकड़ में आता है fake invoices का case, I don't want to continue with the audit. I will pass the case to my anti-evasion department. I will say that, sir, this is a fraudulent thing. Immediately, please issue the order, okay, and block this person's ITC, because this person will use the fake invoices, and we will never get to catch him. ITC amount blocked. The amount जो suspect किए है fraudulent है, वही block करिए. मेरा 10 करोड़ का balance है, उसमें से 5 करोड़ मेरा fraudulent ITC alleged है. पूरा 10 करोड़ आप block नहीं कर सकते. How will I work? Block only that particular portion which is alleged to be received by fraudulent means. And sir, again, investigation. This is an investigation mechanism. Adjudication अभी तक start नहीं हुआ. 86A is used when investigation is going on or audit is going on. Adjudication 73-74 has not started. So जल्दी investigation खत्म करिए, audit खत्म करिए, so that we can pass the case to adjudication cell. They can issue 73-74 and then they can confirm the demand. Sir, there are so many favorable case laws wherein they have said, department बोलता है सर ठीक है कोई बात नहीं है, 1 साल खत्म होने आ रहा है, अभी ब्लॉक आपका तो अनब्लॉक हो जाएगा, बट सर मेरा डिमांड अभी 2-3 महीना में डिमांड ऑर्डर निकलने वाला है, प्लीज फॉर 2-3 more months प्लीज ब्लॉक इट और अप्रोप्रिएट द अमाउंट विच यू हैव ब्लॉक्ड अगेंस्ट द फ्यूचर डिमांड. बात समझिए, 50 लाख रुपया आज मैं ब्लॉक किया हूं, मेरे को पता है 50 लाख का तक तो डिमांड हो ही गई, 1 साल निकल गया, 2 महीने बाद में 14वां महीना में या 15th मंथ में आई विल इशू द ऑर्डर. मैं प्लीड करता हूं अपने सीनियर ऑफिसर को कि सर प्लीज डोंट अनब्लॉक दिस गाय आफ्टर 1 year विच इज द लॉ, प्लीज एक्सटेंड इट टू 15 months सो दैट मैं उस टाइम ऑर्डर निकालूंगा तो आप ये सेट ऑफ कर दीजिए. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. देयर इज नो लॉ रिगार्डिंग दैट. आफ्टर 1 year you have to unblock that, and if you don't unblock that, now the rule has also become amendment automatic unblocking, and there is a provision also which has come, automatic unblocking you can use. So in this particular case there are so many favorable case laws where they are saying, ये देखिए sir, this is a particular case law, second case law here, where no reason was cited, just supply and name was there and no communication, nothing, your ITC ledger is blocked. So the court is saying, sir, please, I understand rule 86A does not warrant a show cause notice, does not warrant further any communication, but please follow principles of natural justice, something to at least give reasons why you are blocking in the communication order or something. It's not an order but communication notice. So then, as for principles of natural justice, you need to give, the officers need to give reasons. What is the reason? Fake invoices, पंचनामा है आपके सप्लायर का नाम का, कि सप्लायर का नाम का, कि L3, L4, L5 सप्लायर का नाम का इन द सप्लाई चेन, वो धोखा दिए हैं एंड इट इज अलीज दैट कि पूरा सप्लाई चेन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, देयर इज ओनली क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच इज फ्रॉडुलेंट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई एम गिविंग यू द रीजन, आई एम ब्लॉकिंग इट टुडे. सो द एसएससी कैन गो and can represent cases and can TDS. TDS under GST has come from 1st of October 2018. Now sir, what is TDS? ये income tax वाला TDS नहीं है. This TDS is when there is any supply made to a government department, who? Central, state government, local authority, government agency, sir, government related, notified category of government, any authority or board where government or has 50%, 51% or more stake, any society established under by the government, PSUs. क्या होता है सर? This is for fraudulent tracking. For government agencies, government these things, if there is no tracking, कितना पैसा गया है, किसको गया है, कब गया है, कितना बार गया है, तो how will we know that there is leakage from the government from the inside? So every transaction which is happening, the government is making payment for against any supply which the government has received from any contractor. 1% TDS will be deducted so that the government, means the main government, can track its own operations and activities. कि कौन से आदमी से किसको पेमेंट गया है, कौन से आदमी से सप्लाई मिला है. So this has become a mandate. In which cases, whether taxable value for one contract, not for n number of contracts in a year. एक साल में 12 contract, every month I have 1 month contract. हर contract 20,000 का होता है, 30,000 का होता है, 3,60,000 for the entire year. No, I don't need to. The government does not need to deduct 1% TDS, because for per contract the taxable value needs to be more than
2.5 lakh rupees. This does not include your tax amount. So मुद्दा का क्या बात है? If there is any supply being made by me, who is a contractor of goods or services to the government, department, government, etc., when they are making the payment to me, at that point in time they will deduct 1%, 2% CGST, IGST or 2% IGST and then remit the money to me so that there is proper tracking to who the money is going. But sir, वो जो deduct हुआ है, will I be able to use credit of that or cash of that? Yes, we can. That will be deposited in my electronic credit or cash ledger. कैसे होएगा? ये this one TDS credit. ये credit मतलब नहीं है. This is in cash ledger. This is when I've got this in cash. This particular amount was the TDS credit which was deducted by the government, submitted within 10 days from the end of the month in GSTR 7A. Within 5 days from the 10th, 15 तारीख of the next month, 7 GSTR 7A जो रिटर्न है उसको GSTR 7 बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट का जो भी अंडरटेकिंग है ऑफ द TDS अमाउंट. विद इन 5 days TDS certificate gets generated in 7A. TDS certificate is given and the assessee has to go on his portal and accept the TDS credit. There is a particular mechanism wherein by the 10th of the next month the government department अपलोड्स द TDS क्रेडिट. मतलब बोलते हैं कि हम इतना काटे हैं, तो जिसका काटे हैं हम TDS क्रेडिट उसकी कैश लेजर में जाना चाहिए. तो वो GSTR 7 फाइल करते हैं विद इन द 10th. विद इन 15th वो TDS क्रेडिट आ जाता है 7A में. एंड विद इन द 20th एज एन SSC आई विल गो ऑनलाइन एंड आई विल एक्सेप्ट. मेरे पास में ऑप्शन आ जाता है TDS क्रेडिट, अलाउ, रिजेक्ट, अलाउ. Once I press allow, it automatically auto populates in my electronic cash ledger. तो ये कैश लेजर में आ गया and I can use it to set off my tax liability. Sir, exception. What is the exception? Sir, location of supplier and the place of supply is in the same state. मतलब क्या है सर? ये एग्जाम्पल. सर, गवर्नमेंट एजेंसी को मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड आई एम गिविंग सम सर्विस. आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर. गवर्नमेंट बिल्डिंग को मेरे को ठीक करना है. गवर्नमेंट बिल्डिंग, where is government building? Government building, for example, is in my state, where I am registered, the supplier in Karnataka. I am registered in Karnataka, the contractor. Government building is in Karnataka. So, as per section 12, subsection 5 of IGST Act, the place of supply of any service in relation to any movable property is the location of the immovable property itself. So, place of supply, मेरा जो सप्लाई का वो कर्नाटका बन जाता है. मैं जो रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड इन कर्नाटका. सो CGST IGST होगा कि IGST होगा? द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट. सो इट विल बी CGST IGST और IGST. CGST IGST. बट किसको बिल कर रहा हूं मैं? वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसको. सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एजेंसी जो है, विल यू बी एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वेस्ट बंगाल ऑफ CGST IGST ऑफ कर्नाटका? It is not possible. That is block credit for him. We know that, right? This we know. Any service in relation to immovable property, तो place of supply and the registration of the supplier is in a place which is different from the location of the recipient. Location of recipient कहाँ पर है? RTI वेस्ट बंगाल. इसी का दूसरा बिल्डिंग है कर्नाटका में. आई एम फ्रॉम कर्नाटका. मैं वहां का पुताई और कर रहा हूं. आई एम डूइंग इंटीरियर ऑफ दैट प्लेस, बट आई एम बिलिंग इन वेस्ट बंगाल RTI. तो वेस्ट बंगाल RTI विल नॉट बी एबल टू टेक इनपुट ऑफ CGST IGST ऑफ कर्नाटका. तो वो केस में TDS एप्लीकेबल नहीं है. कैसे एप्लीकेबल होगा? जब ये वेस्ट बंगाल का पेमेंट कर रहा है मेरे को, तो ये वेस्ट बंगाल का 1% काट लेगा कर्नाटका को पेमेंट करने के लिए. तो कर्नाटका गवर्नमेंट ऐसे ही बैठा रहेगा. Karnataka government will say, right, I should get the entire money. So, in cases, are we understanding the concept? This is consumption is done by the Karnataka. Exactly. The consumption is being done by the Karnataka government. So, GST is a destination consumption based tax where the goods finish और मतलब कि स्टॉप जहां पर होता है या तो सर्विस जहां पर कंज्यूम होता है, एंड कंज्यूम, वहीं पे वो स्टेट का रेवेन्यू है. तो जहां बंगाल से पेमेंट हो रहा है कर्नाटका में, तो दिस विल नॉट हैपन, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ये देखिए दिस एग्जांपल, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र,
तो लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र का हूं कॉन्ट्रैक्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आल्सो इन महाराष्ट्र, ये तो इररिलेवेंट है, ये दोनों है। तो प्लेस इसका क्या हो गया, सीजीएसटी एजीएसटी हो गया ना। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल से, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों सेम स्टेट का है तो सीजीएसटी एजीएसटी, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड स्टेट का है जहां पर मैं कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हूं, आईजीएसटी हो जाता है, राइट। तो ये आपका सीजीएसटी एजीएसटी है एंड इट इज एप्लीकेबल बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। तो टीडीएस इसमें एप्लीकेबल होएगा जब ये रिसिपिएंट गवर्नमेंट एजेंसी जब पेमेंट करेगा किसको, मेरे को, तो 1% काटेगा। सेकंड, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्डिंग है दिल्ली का, क्या जो भी मैं गुड्स दे रहा हूं, गुड्स ये इसको दिल्ली में फिनिश हो रहा है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन दिल्ली। सो व्हाट इज दिस, इज आईजीएसटी ना, आई एम रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली, सो इट इज आईजीएसटी। सो आईजीएसटी है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट is in Delhi, so tax type is IGST, applicability of GST is yes. कौन से केस में TDS नहीं लगेगा, location of supplier, place of supply is one state and location of recipient is another state, not any of these two states, is in a different state. अब तीसरा एग्जांपल देखिए, महाराष्ट्र में I am there contractor, place of supply is महाराष्ट्र, so अब क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, गवर्नमेंट का बिल्डिंग महाराष्ट्र में है, लेकिन मैं बिलिंग कर रहा हूं गवर्नमेंट का दिल्ली डिपार्टमेंट को। तो लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द सेम स्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट। तो सीजीएसटी एजीएसटी लग जाएगा ना, ये वाला एग्जांपल जो मैं बोला था, तो ब्लॉक क्रेडिट है, दिस एक्चुअली ब्लॉक क्रेडिट, द गवर्नमेंट कांट क्लेम क्रेडिट आल्सो ऑन दिस, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस नो टीडीएस इज एप्लीकेबल, दिस इज वन एक्सेप्शन। Sir, registration for TDS deductors from 1st October 2018. सबको registration लेना पड़ेगा, it's mandatory. Even if the government department is not required to take registration also, but for TDS separate registration you need to take separate registration. It is not your normal registration. You need to take a separate registration and with your PAN. And there is no threshold required. 20 लाख 40 लाख कुछ नहीं। अरे भाई आपको डिडक्ट करके पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ऑनलाइन एक्सेस करना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो लेना होगा। यू नीड टू डिस्चार्ज टैक्स टू द गवर्नमेंट, यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। सर ये टीडीएस रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन उसका कुछ आउटवर्ड सप्लाई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आउटवर्ड सप्लाई गवर्नमेंट का है नहीं, लेकिन टीडीएस काटने के लिए बॉडी का भी होता है, पीएसयू लोगों का आउटवर्ड सप्लाई होता है, तो उन लोगों का आउटवर्ड सप्लाई भी है जो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, तो क्या तभी भी, लेकिन टीडीएस का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, और उसके लिए आप जीएसटीआर 1, 3B वो सब फाइल नहीं करना है, सिर्फ आप जीएसटीआर 7 फाइल करिए। जीएसटीआर 7 होता है टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ द टीडीएस, जीएसटीआर 1 है फॉर आपका रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स, 3B है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो सब तो आपका गवर्नमेंट को फाइल ही नहीं करना है कि गवर्नमेंट जो भी आपका लोकल पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी क्या वो जरूरी नहीं है, सॉरी आउटवर्ड सप्लाई के लिए, आउटवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट, आउटवर्ड सप्लाई पर लीज रेंट से जो इनकम हो रहा है, सर मान लीजिए किसी लोकल बॉडी के पास एक होटल या लॉज जैसा है जो खुद चलाता है, नहीं सर वो अलग रजिस्ट्रेशन, वो 20 लाख का चलते रहेगा, वो अलग आपको देखना पड़ेगा, यू डोंट नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर दैट। इफ यू हैव टेकन टीडीएस रजिस्ट्रेशन दैट सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एंड अगर आप सेल कर रही है 20 लाख के नीचे का है तो आपका वो जीएसटी वाला रजिस्ट्रेशन जो 1, 3B फाइल करना वो दरकार नहीं, ये अलग रजिस्ट्रेशन, दिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। दोनों रजिस्ट्रेशन अलग होगा, हाँ दोनों अलग लिखा हुआ है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सर एक ही एंटिटी मान लीजिए उसका टीडीएस के लिए एक जीएसटी नंबर लिया है, और वो जो आउटवर्ड सेल के लिए अलग से एक जीएसटी नंबर होगा क्या उसका? आप बोल रहे हैं कि टीडीएस के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। सर इसका प्रोसीजरल में आपका हो सकता है एक ही में आपका दो अलग हो, आई हैव टू लुक अप दैट, बट ये क्लियर है कि आपका जब टीडीएस आपको डिडक्ट करना है तो देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। इफ यू आर मेकिंग सेल ऑल्सो यू हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन बिकॉज इट विल बी सेपरेट फ्रॉम दिस रजिस्ट्रेशन। उसका अलग नंबर होएगा कि जो होएगा दैट नीड्स टू बी सीन एज पर द प्रोसीजर, but separate registration is required. Same PAN can be used for the registration if he's already registered. ये देखिए आपका जो question, if he's already registered, he still needs to take a separate registration. If he's already registered, if he's not registered, आपका threshold के नीचे का है, no threshold limit, mandatory registration can be obtained on the basis of PAN. So in this case, he may have to take mandatory registration even if his threshold is not 20 lakhs and above. तो ये देखना पड़ेगा कि 20 lakhs उसका क्रॉस नहीं हो रहा है तो उसको
जीएसटी चार्ज करना है कि नहीं करना है, ये चीज देखना पूछ पड़ेगा। रहा है हाँ। कि अगर 20 लाख का कोई सर्विस दे रहा है उसके लिए तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड है। इन माय अंडरस्टैंडिंग 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो कोई मैंडेट नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि आपका एक प्रोसीजर करना है तो आपके ऊपर एक एडिशनल लायबिलिटी के ओनरस बर्डन आ जाएगा, योर अ गवर्नमेंट, और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो मेरे हिसाब से नहीं है। टीडीएस तो वो किसी और के लिए काटता है, That is for a different purpose. yes. That is for different purpose. That is GSTR 7. Yeah. But GSTR 1, 3B, 9, 9C उसके लिए 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वो आपका जो है क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन तभी भी आप टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। तो यू डोंट नीड टू चार्ज जीएसटी फॉर इफ यू हैव द थ्रेशोल्ड बिलो 20 lakhs 40 lakhs, माय ओपिनियन, बट आई हैव टू लुक अप दैट कि वो केस में ओनरस बर्डन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ना। एक टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं 15 लाख का लीज रेंट का करता हूं, जिसके ऊपर में पूरा सबके ऊपर में समान है ना लॉ, ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए 20 लाख नीचे में अगर टीडीएस का लिया हुआ है तो उसको एक ओनरस बर्डन आ जाएगा, उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट शुड जो थ्रेशोल्ड लिखा है ना सर, नो थ्रेशोल्ड लिमिट, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो यूनिफॉर्मली सबके ऊपर सेम ही है। Exactly, that's what I believe. But I looked that up for you. This one. Statutory requirement for TDS to be fulfilled. We have already discussed this. GSTR 7, 10th of the next month, GST certificate 7A में आता है. Within 5 days of filing GSTR 7 अपने को मिलता है. Now common doubts. We have already discussed this. हर एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख के ऊपर का होना चाहिए कि 10 कॉन्ट्रैक्ट मिला करके 2.5 लाख के ऊपर नहीं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सर कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एग्जेम्प्ट भी है और टैक्सेबल भी है। जीएसटी टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली ऑन दी टैक्सेबल पोर्शन। 2.5 लाख रुपया का टैक्सेबल अमाउंट, एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। सो अगर 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से 2 लाख है आपका एग्जाम, 2 लाख है टैक्सेबल, नो टीडीएस। 2.5 लाख का टैक्सेबल आपका सप्लाई होना चाहिए, क्या उससे ऊपर होना चाहिए। ये वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। This is the difference between this. अच्छा, न्यू अमेंडमेंट फॉर दिस GSTR 7। सर कोई महीना में गवर्नमेंट को कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। पहले कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि 7 फाइल करना ही करना है, अभी मैंडेट हो गया। नील रिटर्न भी फाइल करना होगा, क्योंकि क्या हो रहा था सर, बहुत जोलजाल हो रहा था। ये हो गया सर, ये आप लोग का जो है, ये अभी नोटिफिकेशन आया है, ये आपका सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 है। ये देखिए, दिस इज येट टू बी नोटिफाइड। ऑल द जीएसटी अमेंडमेंट्स व्हिच हैव कम इन द यूनियन बजट 2024 फ्रॉम क्लॉजेस 114 to 152, दे आर येट टू बी नोटिफाइड। तो ये चीज अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, ये बजट में आया है, तो दिस इज येट टू बी नोटिफाइड। लेकिन इसके रिलेटेड अगर कोई सर्कुलर आया, विच आई डाउट, सर्कुलर तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आपके सेक्शन में ही है, विद इफेक्ट फ्रॉम डॉट 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 डॉट, ये है। सर कुछ पेनल्टी है? हाँ, लेट फीस है इसका। ये देखिए, इसका जो आपका लेट फीस है वो 3B1 ये, लेकिन नहीं, यू आर राइट, इसका लेट फीस भी है, देखिए ना नीचे लिखा हुआ है। रिटर्न ऑफ 7 to be filed by registered person who are required to deduct TDS under 51 to be filed every month irrespective of whether any tax is to be deducted. It has also been recommended that no late fee may be payable for delayed filing on nil form GSTR 7 return. Further, it has been recommended that invoice-wise detail may be required to be furnished in the said form GSTR 7 return. इसमें तो लिखा हुआ है it is recommended, अभी तो notify नहीं हुआ है that no late fee for nil return. लेकिन nil return नहीं है आपका, कुछ भी अगर आपका जमा करना है और वो लेट करते हैं, 12-13 तारीख को करते हैं, तो उसमें तो आपका लगेगा ही लेट फीस। कितना है सर ये देखना पड़ेगा कितना है। अब जैसे नॉर्मल केसेस में आप नील रिटर्न का देखेंगे तो 10-10 है, तो उसमें तो नील में है ही नहीं, और नॉर्मल 1 और 3B में 25-25 रुपए है, 50 रुपए है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से 25-25 रुपया होना चाहिए, बट आई हैव टू लुक दैट अप। मेरे हिसाब से कोई गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली इट शुड बी 10 रुपीज, आई थिंक ये होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस फॉर लेट फीस एज वी डिस्कस्ड, दिस इज सब्सिडाइज्ड लेट फीस 25 मैक्सिमम 50 फॉर 1 and 3B लेट फाइलिंग, जो मैं 8 दिन 10 दिन जो बोल रहा था, और ये नील रिटर्न के लिए 10-10। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस सब्सिडाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर द एसएससीज। ये कब से स्टार्ट हुए? 2021 से। नील रिटर्न का क्या है, मैक्सिमम लेट फी कितना हो सकता है? 10 करके मैक्सिमम कैन गो अप टू 500 फॉर नील रिटर्न। अदर देन नील रिटर्न 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर, तो आपका मैक्सिमम लेट फी कितना है? 1000 सीजीएसटी एजीएसटी 2000। अगर बड़े है उसका आपका 5000 है, मोर देन 5 crores है तो 10,000 ऐसे करके।
अच्छा, दिस वन इज द ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब इसमें सेक्शन 53 में क्या बोलते हैं सर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट व्हाटएवर पॉइंट ऑफ व्यू. ये एग्जांपल देखिए, ये राज है, ये बेचता है किसको? बी को, राइट? इंट्रास्टेट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख का है, सीजीएसटी आपका है 9,000, एसजीएसटी 9,000, 9,000. ये आगे का भूल जाइए, अभी भूल जाइए. अभी के लिए वेयर इज द डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन इज इन द सेम स्टेट, कंजम्पशन सेम स्टेट. तो किसके पास में रेवेन्यू जाना चाहिए? एकदम करेक्ट है, स्टेट के पास आधा और सेंटर के पास आधा. ये स्टेट में, ये जो स्टेट है अभी तक ठीक है. लेकिन अब उसके बाद में क्या हुआ? ये आदमी जो है ये फर्दर बेचता है आपका यहां पर, इसको दिल्ली में बेचता है इंटरस्टेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,20,000. आईजीएसटी लग गया ना? द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इन वन स्टेट, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज इन दिल्ली, तो आईजीएसटी लग गया. अब यहां पर खड़ा होकर के बोल सकते हैं ना कि ये सब तो बेकार है, लास्ट माल तो सेम माल जो गया वो तो दिल्ली में गया है, तो दिल्ली का यूटीजीएसटी मिलना चाहिए ना, और सॉरी आईजीएसटी मिलना चाहिए ना. द फाइनल स्टैंडिंग राइट नाउ आई शुड से दैट द रेवेन्यू शुड बी आईजीएसटी. इट शुड नॉट बी ऑल दिस. ये तो पुराना है, ये तो एडजस्टमेंट हो जाएगा. वो एडजस्टमेंट क्या करना है वो देखिए. अब व्हेन राज इज सेलिंग इट इन दिल्ली, बी इज सेलिंग इट टू सी हियर, सो यहां पर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 21,600. ये वाला, ये 1,20,000 पे आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है? 21,600 ना. ये जो यहां पर जो खरीदा इंट्रास्टेट, उसमें इनपुट कितना क्लेम किया है? 9,000 ना. अरे इंट्रास्टेट है सर. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेंटर, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ स्टेट 9,000, 21,600. ये आईजीएसटी का होना चाहिए. मैंने क्या सेट ऑफ किया है? स्टेट का. ये स्टेट का 9,000 मैंने इसके साथ में सेट ऑफ कर दिया, आईजीएसटी के साथ में 9,000. सो अब आईजीएसटी का खाता में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है? आईजीएसटी का खाता में ओनली 3,600. इट शुड गेट 21,600. अरे इनपुट सेट ऑफ कर लिए ना. वी सेट ऑफ इनपुट ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट, दूसरा स्टेट एंड ऑफ द सेंटर. 3 खाता होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों अलग है. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज डिफरेंट खाता ऑफ आईजीएसटी, डिफरेंट खाता ऑफ सीजीएसटी, राइट? नाउ इन टोटल अभी तक के लिए आईजीएसटी का कितना होना चाहिए था? 21,600. गवर्नमेंट का खाता में फाइनल रेवेन्यू आना चाहिए था, बिकॉज एज पर राइट नाउ दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. बट गवर्नमेंट को कितना मिला आईजीएसटी खाता में? सिर्फ 3600. तो कौन किसको क्या देगा सर? ये स्टेट गवर्नमेंट का जो इनपुट है वो यूज करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट का आईजीएसटी का आप सेट ऑफ कर दिए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट 9,000 देगा ना इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी का खाता में. सो व्हाट विल हैपन? दिस पर्टिकुलर आईटीसी व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज हुआ है ये स्टेट का 9,000 का, टू मेक पेमेंट of 21,600 of IGST to the center. So 9,000 is set off. So this state government will pay 9,000 to the central government. कौन से खाते में? इंटरनल जो है IGST में. और सर CGST जो है 9,000, वो भी तो IGST में. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक खाता से दूसरा खाता में 9,000 डालेगा ना. तो 9,000 प्लस 3600 कितना हो गया? 21,600 जो IGST का मिलना चाहिए, सेट ऑफ हो गया. लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट थिंग. ये जो आदमी है जो दिल्ली वाला जो इंट्रास्टेट खरीदा है, जो आईजीएसटी का इंपुट जो था ना, अब उसका इंपुट बन गया 21,600 का. ही इज सेलिंग इन इंट्रास्टेट इन दिल्ली ओनली. दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन. कंजम्पशन हो गया B2C, ये घर में यूज हो गया. तो इसके बाद में और कुछ है नहीं. अब फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज इन दिल्ली. नाउ द फाइनल टैक्स ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज चेंज. इट्स नो लॉन्गर आईजीएसटी. इट इज सीजीएसटी एंड दिल्ली यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी 99%, 1,50,000 पे कितना हो गया? 13,500. मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को 13,500 रुपया खाता में दिल्ली गवर्नमेंट का आना चाहिए. लेकिन जब ये जब पेमेंट कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट को ये अमाउंट, तो क्या करता है? आईजीएसटी का इंपुट है. क्या कितना इंपुट है आईजीएसटी का इसके पास? 21,600 ना. 21,600 उसको ब्रेक कर लिया हाफ में. वी कैन ब्रेक आईजीएसटी इंपुट वी जस्ट डिस्कस्ड to set off output tax liability of CGST and SGST in any proportion. We are aware of that. We just discussed. After exhausting IGST input, we can utilize the input of IGST. We have to utilize the input of IGST in any proportion to set off CGST and SGST output tax. CGST, SGST final output tax जो है, मैंने IGST का input है उसको split कर दिया. 21,600 को 10,800, 10,800.
अब फाइनल मिलना चाहिए सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी का खाता में 13,500 और दिल्ली यूटीजीएसटी में मिलना चाहिए था 13,500, मिला कितना है? सिर्फ 2700 मिला है, तो नुकसान हो गया दिल्ली यूटीजीएसटी का। तो कौन भरपाई करेगा? कौन भरपाई करेगा? आईजीएसटी खाता। आईजीएसटी से 10,800, आईजीएसटी से 10,800 दिल्ली यूटीजीएसटी के पास जाएगा 10,800, बिकॉज आई यूज दैट एज सेटिंग ऑफ फॉर एक्चुअल पेमेंट टू दिल्ली सीजीएसटी, दिल्ली मतलब जो भी गवर्नमेंट का है। तो 2700 प्लस 10,800 कितना हो गया अपना? 13,500। तो दिल्ली गवर्नमेंट का तो खाता मिल गया, चलो टाटा बाय बाय। अब यहां पर सीजी आपका आईजीएसटी जो था और यहां पर सीजीएसटी आपको खाता में कितना मिला है? 2700 सीजीएसटी। लास्ट कितना मिलना चाहिए था सीजीएसटी को? 13,500, लेकिन मिला कितना है सेट ऑफ के बाद में? 2700। सेट ऑफ कौन किया? आईजीएसटी। तो वो केस में क्या होएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी स्टेट को दिया है, लेकिन आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को सीजीएसटी में देने का दरकार नहीं है। वी हैव डिस्कस दिस। सीजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी का आउटपुट के साथ में यूटिलाइज किए, तो भाई जितना इनपुट यूटिलाइज किए उतना ट्रांसफर कर लीजिए। गवर्नमेंट का खाता एक है सीजीएसटी का, उसमें से ट्रांसफर करके आईजीएसटी में ले आइए जितना इनपुट यूटिलाइज किए। एसजीएसटी का अगर इनपुट है और फाइनल पेमेंट जाना था आईजीएसटी को, तो स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट में यूज करके आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेमेंट करना है आई यूटिलाइज, तो स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी। थर्ड थिंग, आईजीएसटी जो लास्ट वाला जो मैं देखा हूं यहां पर, ये वाला आईजीएसटी का इनपुट इज सेटिंग ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी का आउटपुट। सो इन दैट केस आईजीएसटी बड़ा खाता से छोटा खाता में जाने का कोई दरकार नहीं है। बट इफ इट इज द अदर वे राउंड, इफ इट इज द अदर वे राउंड, सीजीएसटी से सीजीएसटी का इनपुट है, आईजीएसटी का आउटपुट है, तो उसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को सीजीएसटी से आईजीएसटी में, बट नॉट वाइस वर्सा। आईजीएसटी का ये तो लास्ट एग्जांपल था। आईजीएसटी का इनपुट था 21,600 का, जो स्प्लिट किए थे दिल्ली यूटीजीएसटी को जाना था 10,800, गवर्नमेंट हैज गिवन टू दिल्ली यूटीजीएसटी। ये यहां पर है, आईजीएसटी का इनपुट है, एसजीएसटी का आउटपुट है। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, दिस इज इंटरनल from one khata to the other, right? So more or less we have covered everything. If there is any question, please feel free to whatever, and if anyone wants to also mention their details and all that, can do mention, so that we can stay in touch and I can send all these updates and everything. I'll add it to the group. If there is any question, please do ask me. The floor is open. I hope the session was beneficial for all. I hope I could explain the concepts properly.